on the listener. This creates such an impact on the listener कि listener tries to connect with it, and then वो emotional touch आ जाता है उसमें, and like हमारी पॉलिटिक्स में भी अक्सर कहा जाता है कि इसको इमोशनल टच दिया, इसको रिलीजियस टच दें, बट दैट्स व्हाट leaders do. That's what you do when you have to set a vision. Second thing that storytelling does is it creates a dopamine effect. Dopamine being a hormone that gives you an experience of emotions, great emotions, be that joy, be that sorrow. So अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास 7 के 8वें दिन पे क्या हुआ था, you wouldn't probably remember. But if there is a story to it, कि यार मैं ना क्लास 7 में गया था और 8वें दिन में नया-नया बच्चा था स्कूल में, लाइक मैं गिर गया था, लाइक मेरी जीन्स फट गई थी या मेरी फिर यूनिफ़ॉर्म जो है वो फट गई थी। You as soon as you listen to the story, आपके दिमाग आपके बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है, and that is what gives the emotional trigger, and that's where you connect with the story, and वो स्टोरी आप ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हो, rather than कि हाँ, क्लास 7 का 8वां दिन या 10वां दिन, nobody remembers that. क्योंकि लाइक अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि आज से 3 साल 5 दिन पहले आप कहाँ पे थे, you wouldn't remember. But if there's a story to it, you are more likely to remember it. थर्ड एंड फोर्थ आर कॉर्टेक्स एक्टिविटी। कॉर्टेक्स एक्टिविटी इज बेसिकली कि जब आप फैक्ट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं ना दिमाग में। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको ये बोलूं कि 300 लोग इंतकाल कर गए, आपके सिर्फ दिमाग के दो हिस्से जो है वो एक्टिवेट होते हैं, नेमली ब्रोकास एंड वर्निक्स। बट इफ आई वाज टू अगेन टेल यू द स्टोरी, आपके मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द दिमाग जो है वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। आप सोच रहे होते हैं, आप इमेज बना रहे होते होंगे कि यार जो लड़का बहावलपुर में मिला था वो कैसा होगा, बहावलपुर कैसा होगा, वो लड़का उसने स्पीकर के साथ क्या बात की होगी। ऑल दीज इमेजेस आप अपने दिमाग में बनाते हो, एंड दैट्स मोर लाइकली यू आर टू कनेक्ट विद द स्टोरी। एंड ऑल्सो मिररिंग, फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग, व्हाट हैपेंस इज कि यार जरूरत नहीं कि वो लड़का वही बहावलपुर का लड़का होता, हो सकता है वो शायद मेरा कजिन होता, हो सकता है वो मेरा दोस्त होता, हो सकता है वो मैं होता, कि आई वाज गोइंग थ्रू दिस, एंड नाउ व्हेन यू कनेक्ट विद द स्टोरी, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, रादर देन मैं आपको बोल दूं अगेन कि 300 लोग इंतकाल कर गए, क्योंकि हजारों लोग लाखों लोग रोज इंतकाल कर जाते हैं, मतलब दैट्स नेचुरल प्रोसेस। बट इफ यू कनेक्ट अ स्टोरी विथ इट, that is way more impactful. Okay, so that gives us the brief idea कि आप when you put anything in a story, and if it's emotionally connecting, that gives you an upper edge कि आपकी बात सामने वाले के दिमाग में रह जाएगी। Sorry, 1 second. Okay, so we have the storytelling now. We know that storytelling is a powerful tool. What do we do next? What do we do next is we use storytelling for our own career growth. How do we use actually storytelling for our career growth? Kamal, or like any of the audience, have you guys been into interview? Yes, sir. Okay, so I'm sure that you guys would have heard this question: define yourself or introduce yourself, right? Yes, sir. Right. And how do you answer that? Sir, it was my first interview. I just told them my name and intermediate and metric. But later on, when at the time of university, I told my past, present, and future all in my interview in introduction section. Okay, that is actually really great. Anyone else would like to answer this question? Introduce yourself. How would you do that in an interview? Anyone else? Okay, so I guess nobody else. So basically, I guess it was Kamal who answered the question. So when you are asked this question, introduce yourself. सामने वाले के पास आपकी सीवी पड़ी है, right? He knows your name, he knows your qualifications. तभी तो आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो, like. और अगर सीवी नहीं है तो आप किसी रेफरेंस के थ्रू गए हो, like already he knows your name and he knows your qualification. What he or she is seeking from you, the interview,
is seeking from your interviewer is कि भाई sell yourself or tell me about yourself कि मैं आपसे connect हो पाऊं. And that is when you say कि okay, let's say if I was to introduce myself in this way, or like चलो मैं अपने आप को ना आपसे introduce करता हूँ. मैं आपको अपने आप को इस तरह introduce, यार मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है. मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है और आजकल मैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में पढ़ रहा हूँ और मैं आगे जो है वो एक अच्छी जॉब करना चाहता हूँ. अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूँ, ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, मेरी क्वालिफ़िकेशन है, कुछ भी झूठ नहीं है, सब कुछ सच है. बट इफ आई वाज़ टू टेल यू इन अ वे, so I started my journey back in 2013 when I was a pre-medical student and I essentially wanted to become a doctor. But later on, I realized, no, I actually don't want to be a doctor. I'm more interested in the technical side of the healthcare technologies. और टेक्निकल साइट्स को देखते हुए आई चोज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. एंड फ्रॉम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आई डेल्व्ड इनटू हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह चलता है, हाउ डू पेशेंट्स वर्क, हाउ डू व्हाट इज पेशेंट एक्सपीरियंस में, इन चीज़ों में मैंने काम किया. And then after that, I started my journey at Aga Khan University, where I learned formally about storytelling, where I learned about narrative medicine, where I learned about how you can actually put your career growth first. And वहाँ से my patient peaked, and then I went to the Nurse Islamabad, जहाँ पे मैंने अपनी further studies की. और वहाँ से I really understood कि if I really wanted to make an impact to the healthcare society, these were things that I need to do. And वहाँ से मैंने scholarship के लिए apply किया. And this is just a story that I'm like just simply making it up. Like if I wanted to give it an emotional touch, I would say, okay, I had a brother who is severely sick, and technology for his treatment is not available. That's why मैं technology में गया था, health biomedical technology, and that's why मैं healthcare management, healthcare industry में कोई impact लाना चाहता हूँ. Which story connects you more? पहली वाली जिसमें मैंने 4 जुमले बोले, मेरा नाम मोहसिन है, मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, मैंने नर्स से पढ़ाई की और मैं आजकल बिजनेस इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ. या द अदर स्टोरी वेयर मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स दी, जहाँ पे मैंने अपने कैरियर और एम्बिशंस को भी बताया, but in form of a story that really connects, that gives you a hook. कि यार started my journey in 2013 and तब से मैं सोच रहा हूँ, तब से I'm doing this. And like if I add more years, if I add more detail into it, that is more likely a better answer to it. That is that story. And like this is not a like great story which I told right now, but there can be a way better version of this that you can actually come up for yourself. For example, someone of you could be coming from, let's say, Third Parker, and that kid can make the story. Sir, I raised up in the remote areas of Third Parker when the electricity was rarely accessible. And then I decided, no, like I actually want to study. I want to go university. I want to maybe, let's say, be an electrical engineer, or maybe I want to learn about plastics because I see there's a lot of pollution. मैंने अपनी surrounding में देखा कि यार pollution है, problem है. That story is more likely to connect rather than कि आप ये बताओ कि क्या हुआ और like मैंने क्या degrees की. So the where Kamal said, I told my past, present, and future. That is essentially the key. You're telling your past, present, and future, but in form of a story that connects. So you have to really be careful with your words. So storytelling के तीन जो है parts में आप simply divide कर सकते हो. Like this is called a 3-act structure by Aristotle. Well, there are different versions of how can you tell your story, but like one of the simplest one is, and I really like this one. This is a beginning, this is a middle, this is an end. So for my story, beginning would be I started my journey in 2013, right? And middle would be when I was in the Mehran University of Engineering Technology doing my biomedical, or maybe at Aga Khan. That could be the middle point right now. And let's say then I like grew up, I got the scholarship, or I did this, and then I will go towards an end that my ultimate aim is, and like this is always an important story, part of the story, that my ultimate aim is that I want to serve healthcare management industry. And like that's how you get your target audience, target people. And this अभी जो हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग की, वो सिर्फ कैरियर परस्पेक्टिव से कर रहे हैं, बट दिस इज जनरल. तो अगर आप कोई और कहानी बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टू टेल क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज की स्टोरी, what you would essentially do is कि sir, I grew up in a remote area of Pakistan which was green, lush,
साफ, बिल्कुल good. And when I hear the stories from my parents, they say कि हमारे टाइम पे प्लास्टिक नहीं होती थी, हमारे टाइम पे roads were like really clean, good. But then I grew up in an urban setting जहाँ मैंने बहुत सारी प्लास्टिक यूज होते हुए देखी. I started observing plastic pollution surrounding me. एंड देन लाइक मैंने उन चीजों को प्रॉब्लम्स को नोट करना शुरू किया. दैट कुड बी योर प्लॉट पॉइंट वन. मैंने प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स को नोट करना शुरू किया. एंड देन योर मिड पॉइंट कुड बी कि आई एक्चुअली वेंट अबाउट स्टडिंग अबाउट इट. आई एक्चुअली वेंट कि यार इनसे प्रॉब्लम क्या होती है. द प्रॉब्लम्स यू कुड आइडेंटिफाई लाइक टॉप ऑफ माई माइंड कि आपकी जो प्लास्टिक पोल्यूशन होती है वो आपके ओशन के एनिमल्स में जाके लाइक उनके स्टमक में जाके उनके फूड चेन में का हिस्सा बन जाती है. आई वाज टू लाइक मेक इट वेरी सिंपल. या फिर आपके वो इकोसिस्टम को खराब करती है, या फिर आपके वो सिवरेज को ब्लॉक कर देती है. एंड देन लाइक वहां से आप एक कहानी बना सकते हैं कि हाँ, जब मैं लाइक आई वाज अबाउट 18 years old, पाकिस्तान में एक बहुत डेवास्टेटिंग फ्लड्स आए थे. How do I connect that with the plastic pollution, or how do I connect that with the climate change? So one of the main reasons for floods back in Pakistan was कि हमारे जो सिवरेज सिस्टम्स थे वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं थे. Then it came to me, could plastic actually be a cause to that problem? Maybe yes, or maybe not. I started working on it. Then I realized, okay, plastic was a problem, but उससे भी बड़ी problems थी. Then that could be your second climax. And then you say, okay, that's where I decided कि मुझे इसी पे काम करना है और मुझे इसका solution निकालने पे काम करना है. And then you go on talking about, yeah, I was a climate activist. I was working on the climate action. That's what I did. So that's how you can tell your story for the climate change. But again, you could tell the same story for your career growth, for your interview jobs. But jobs या फिर career सिर्फ interview तक limited नहीं होता. So deal with the career in the private sector is कि आपको अपनी story हर वक्त बताते रहनी होती है, because आपकी growth उस पर essentially depend करती है. How can actually uh, stakeholders trust you? So stakeholders will connect with you or trust you via your story. So for example, let's say एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में जो कि साल के 30 बहुत अच्छे पेपर रिसर्च पेपर्स निकालता है, एंड ही इज डूइंग रियली फाइन वर्क. साल के वो 30 पीएचडी स्टूडेंट्स भी निकाल रहा है. लाइक वो सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं. बट उस प्रोफेसर की स्टोरी कोई नहीं बता रहा. वो प्रोफेसर बस आता है, रोज अपने डिपार्टमेंट जाता है और काम करता है. कूल, गुड. वाइस चांसलर को पता भी नहीं, क्योंकि मतलब पता होगा ऑब्वियसली प्रोफेसर है, बट ठीक है, एक और प्रोफेसर है, नॉट अ बिग डील. ऑन द अदर हैंड देयर इज अदर प्रोफेसर जो साल के 30 नहीं बल्कि लेट से 7 पेपर्स निकाल रहा है बड़ी मुश्किल से, और 4 पीएचडी स्टूडेंट्स निकाल रहा है, बट ही इज वेरी एक्टिव. He's very active and he's telling his story again and again. He's telling his impact of his work again and again. Who do you think is more likely to get a promotion in the sight of vice chancellor? I believe it is the one who's telling his story again, and it's the one who's telling his impact again and again. And that's just an example. We're not trying to delve into the politics of any university or anything. That's just one example. That's how important it is आपकी career growth के लिए, that you tell your story, you tell your work, you tell your ambitions, you tell your impact. And that's okay. Again, everything. Your ambitions start with your beginning. You tell your work, that's your middle. You tell your mission, you tell your impact, that's your climax. आपका end goal क्या है? That's the end of your story. That's what you're looking for. Um, Now that so far we have covered what is storytelling, why is it important, uh, who are the greatest leaders who have like set agendas and visions through storytelling, and then we have tried to form a simple story for ourselves. Now, okay, for your career, I am assuming like all of you are starting your career just right about now. So how do you do that? You create a good CV, you create a good LinkedIn profile, you do good interviews, and hopefully you get a great job. Hopefully. So CV is probably in the next session. We'll talk about how important it is to have a good LinkedIn profile and how can it help you. So personally for me, my first job was via LinkedIn. I found it through LinkedIn, then I applied via different methods. Uh, my this scholarship was I found it via LinkedIn, and then I applied via email. Again, but like both the opportunities were via LinkedIn. So a bit about me.
is that when I was a biomedical engineer, I graduated, I moved to Karachi, and I was like looking for jobs. I would look maybe on Indeed, maybe on some other platforms, but I was also active on LinkedIn, and that's where uh, things that were of more interest to me would often pop up, because when I was active on LinkedIn, the algorithm of LinkedIn knew what I was interested in, what I was communicating with, and that's where the opportunity that was very much relevant to me, being innovation fellowship at Aga Khan University, pop up in front of me. And then, okay, this is something of interest to me, and like I did not open that opportunity as a job opportunity. I did see that opportunity as, okay, it seems of something of interest to me, and that's how I got it. And I guess I was lucky to get that. But more than lucky, it was me being on the LinkedIn, me being actively engaging with the work that I can relate to. So अपनी अपने वो होता है ना, like पाकिस्तान में एक like मशहूर कहावत है, I'm not getting the words exactly, but आपकी सोहबत का ना आप पे असर होता है। जिस तरह की आपकी सोहबत होती है, you that's the kind of people, that's the kind of journey that you are gonna live. अगर आपके सराउंडिंग में लोग अच्छे होंगे तो you are gonna go good ahead. So LinkedIn essentially आपके लिए वही करता है, but in terms of your career. So you go on LinkedIn, let's say आप electrical engineer हैं, you would be searching something around electrical engineering. अब electrical engineering बहुत vast field है। अब electrical engineering में let's say you're interested in power, तो आप power के around के लोगों को follow कर रहे होंगे, उनका काम देख रहे होंगे, and that's how you interact with, like लोग वहीं पे opportunities share करते हैं, वहीं लोग वहीं पे बात करते हैं, so that's where you create an opportunity for yourself as well. So that tells us the importance of LinkedIn profile. So now the next steps are like very practical and very simple, जहाँ पे हम will talk about how do we actually create a good LinkedIn profile. So this is I was like searching for this presentation last night, and like, okay, I went through the LinkedIn, I was looking for examples, and then I popped up on this LinkedIn profile. Again, no political affiliations, but this is a very well uh, curated LinkedIn profile, and I suppose that Mr. Imran Khan has not been active lately, but he was active back in time, because and that is reflected when you go to his LinkedIn profile. The last good updates are from 2011 to 2012, but that was updated and maintained very well. So what this does is, I don't need to tell you what this LinkedIn profile is already telling me. This is telling me, this is for Mr. Imran Khan. He's telling me that, okay, he works on IKCA, Imran Khan Cancer Appeal. He did a study from University of Oxford. It's already telling me that. And it's already giving me a call for action, that is book your Kurbani with Imran Khan Cancer Appeal. And from the cover picture, it's already giving me the Shaukat Khanum Memorial Hospital's picture. So just a simple snap, but just imagine how much of information it gave me with an instance. And it also told me, like, if you look deep into it, it also told me Imran Khan has 40,000 up plus followers on LinkedIn. And that is just a LinkedIn profile for a lately for a politician, or let's say an activist turned politician. That is huge. And more than 500 connections. That is already telling me he's someone popular. He's someone who graduated from Oxford, someone working with Cancer Appeal, someone associated with the Shaukat Khan Memorial Hospital. Even if मुझे नहीं पता होता इमरान खान कौन है, this is more than enough to tell me his complete story. So that's just I found this is a good example, hence I stuck it here. So this one being his profile picture, and that is a very good example of a profile picture जहाँ पे आपका face सामने हो, आपकी आंखों से आप, like, even the profile picture, Imran Khan is communicating with his mild version of his smile, like with his eyes. That's what he's telling you. The second part is his LinkedIn headline, and very simple. Talks about Pakistan, talks about hospital, talks about cancer research, talks about cancer treatment. Simple, nothing too complicated, but it's telling me his vision and his story and what he aims to do. And the main part is cover picture as well, because that is giving me his background, his affiliations. So okay, so we did say that we'll do 6 steps of creating a good LinkedIn profile. 6 steps. First one being a good profile photo and a custom header. So this one being a custom header with the Shaukat Khanum pictures shown. Okay, so what is a good profile picture? A good profile picture would be something in which you look appealing. अगर
आप अपना आपकी पिक्चर ऐसी होगी ना जिसका बहुत सीरियस बिल्कुल तन के खड़े होंगे, that wouldn't really. Oh, 1 second, sorry, I realized that my video is off. Let's say I'll try to make some good expressions if I can notice myself. Okay, so अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर के लिए ऐसी पिक्चर लूं, सर, that is profile picture, that is one picture, but other picture could be. So which one is more appealing, in which I'm smiling or जिसमें मैं सीरियस होके खड़ा हुआ हूँ? सीरियस होके पिक्चर आ जाएगी, दैट्स फाइन, बुरी नहीं लगेगी, बट वो इतनी अपीलिंग नहीं होगी टुवर्ड्स द रीडर. सो इफ यू हैव अ गुड स्माइलिंग पिक्चर जहां पे आप आंखों से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड मोर लाइकली पोर्ट्रेट आपके नेक हाइट तक या शोल्डर हाइट तक, or like a good height would be as shown in this picture, or as by Imran Khan in this previous picture. Goal for your professional picture is that आपकी पिक्चर जो है वो प्रोफेशनल लगे, should be neat and clean, किसी पार्टी की ना हो. ऐसा ना हो कि आपने किसी पार्टी में आप स्माइल करें तो वो अपनी वो कैप पहनी हुई है पार्टी वाली और बर्थडे वाली, वो पिक्चर ना हो. It needs to be professional yet approachable. Then you should genuinely look happy in your picture. अगर आप वो फेक हैप्पीनेस करेंगे तो वो नजर आ जाती है पिक्चर में. That is first step of creating a good LinkedIn profile. So second part of a good LinkedIn profile is that you write your headline. So as we saw in Imran Khan's case, simple headline talks about Pakistan, talks about this. But a simple other headline could be, let's say, in case of Ma'am Lala Rukh, simple headline would be electrical engineer, climate activist, energy, I don't know, something, but like climate activist, that would tell me the entire story about the climate action in Pakistan. And like for your case, that could be, let's say, if you're a businessman or if you're an entrepreneur, then could be entrepreneur, designer, investor, or like a student, maybe. Student would be a great headline for a student. So it should be like 3 to 4 or like 4 to 5 words or maybe one sentence at best, but it should reflect what you are doing in your life and like where do you want to be. It should reflect in 3 to 4 words or maybe a sentence, in a nutshell. Okay, so after your headlines comes your summary, and summary is around 40 words to 100 words. Should be no more than like 200 words or that, but like minimum of 40 words. And what this should do is this should include keywords. And importance of keywords पे हम आते हैं, but पहले हम summary को clear कर लें. Should not have buzzwords. वो ना हो कि यार I'm enthusiastic to do enthusiastic work in the climate, enthusiasm with the world leaders. इस तरह की नहीं. It should have keywords. I'm a climate activist working on plastic pollution. Let's say in the region of Tharparkar or in the region of Nowshera, maybe in the region of Islamabad. आपने simple करके आपने अपनी ना story बतानी, या फिर you could say that working at Climate Action Pakistan as an intern, or maybe working at Climate Action Pakistan as co-director, with the aim to do this. And I love talking about my knowledge on healthcare, or sorry, in case of climate action, it would be my knowledge about the environment. Simple, and like आप नीचे अपनी कुछ simple सी hobby डाल दें, that in my spare time I try to do, let's say I play hockey, or let's say I play tennis or something, or maybe right now as a student I'm looking into the research, or like I'm looking for the jobs. This तरह का आपने कुछ simple सा. अच्छा, so importance of keywords is कि I am sure that you guys would have heard of SEOs, search engine optimization. So सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपको ये कहती है कि आप अगर कीवर्ड्स, हैशटैग्स प्रॉपर डालेंगे तो आपकी पोस्ट या आपकी जो वो प्रोफाइल है उसको देखे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो अगर आप कीवर्ड्स डालेंगे, फॉर एग्जांपल इन माय केस द कीवर्ड्स आई वुड यूज इज हेल्थ केयर, इनोवेशन, मैनेजमेंट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. अब मुझे अपनी स्टोरी में ये कीवर्ड्स डालने होते हैं, so that any healthcare manager who is looking for a healthcare worker or healthcare innovation analyst, let's say, if he searches for that, my profile should be one of the top profiles जो ऊपर आना चाहिए. These are the keywords that I use for myself. You need to figure out for yourself. Okay, so after your summary, what you need to write about is your experience. And experience आपके LinkedIn में नीचे होता है. But it's like very important because it tells me कि आपकी past की journey क्या है, like past to the present आपका क्या रहा है, and that will define कि आपका future क्या होगा. So for example, if you are a student right now,
तो आपकी जर्नी में मोस्टली इंटर्नशिप्स होंगी, मोस्टली ट्रेनिशिप्स होंगी, बट लेट्स से समवन डिड अ जॉब आफ्टर इंटरमीडिएट, तो आप वो डाल सकते हैं। लेट्स से आपने किसी शॉप पे काम किया है तो भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट गिव्स यू लाइक निगोशिएशन पावर, कि आपको निगोशिएशन आती है। आपने जॉब आपने शॉप पे काम किया हुआ है जहाँ पे आपको लोग रोज 1000 लोगों से डील करना होता था, या मे बी आपने किसी फार्म में काम किया हुआ है, आपके घर का फार्म हो, आपका अपना फैमिली का फार्म हो सकता है, यू हैव वर्क देयर, तो यू वुड गिव एन एग्जांपल कि ओके आई डिड मैनेज द लेट्स से 10 acres of the land, and वहां पे I had to deal with like 10 different vendors, जो कि let's say 10 different vendors for a farm could be घास जिनको बेचनी होती है, फसल जिनको बेचनी होती है, फर्टिलाइजर्स जिनसे लेने होते हैं। That's all I did. That could be your experience as a student, but as a like professional, let's say my experience would be biomedical engineer at certain hospital, healthcare innovation fellow at a certain hospital. Then my experience also has data scientist at Royal Cyber. Then I would like add all of those. एंड ये सारा इंपॉर्टेंट क्यों है बताना, एक्सपीरियंस बताना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन आप सीवी में भी एक्सपीरियंस बताते हो, बट लिंक्डइन गिव्स यू रूम कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुल के लिख सकते हो। सो व्हेन आई एम गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, इट गिव्स मी कि यार ठीक है, ये बच्चे ने ओके लेट्स से यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है, सीनियर कस्टमर सक्सेस कंसल्टेंट, ठीक है, ही कुड हैव मेंशन द सेम ऑन हिज सीवी, बट द नेक्स्ट पार्ट जो है, उसने एज अ सीनियर कस्टमर सक्सेस कंसल्टेंट क्या क्या किया था, that gives me a deep look into it, and then I can okay, I'm committed to helping our strategic clients attract, recruit and hire top talent. Okay, that's मुझे भी एक ऐसा ही बंदा चाहिए जो मेरे लिए काम कर सके। My goal, this goal is accomplished by understanding each other's unique recruitment. Okay, ये मुझे इस बंदे की philosophy और उसके तरीके के बारे में बता रहा है। शायद मैं इससे एग्री करता हूँ, शायद मैं नहीं करता, बट दिस गिव्स मी क्लियर आइडिया कि मुझे ये बंदा चाहिए या नहीं। एज अ रिक्रूटर दिस गिव्स मी क्लियर आइडिया कि मुझे बंदा चाहिए या नहीं चाहिए, एंड लाइक चाहिए तो recruiter could approach you. So writing about your experience is very important in this sense. Fifth part would be कि आप अपने skills डालें। Skills का एक अलग से सेक्शन होता है LinkedIn पे। So your skills could be data analyst, your skills could be climate activist, or your skills could be management, could be design thinking, could be engineering, could be chemistry. Let's say I'm a lab professional, तो वो आपके लैब मैनेजमेंट टूल्स में स्किल्स में आ जाता है। अच्छा, स्किल्स डालने के बाद एक और चीज होती है लिंक्डइन पे, यू गेट इंडोर्स्ड। सो फॉर एग्जांपल, आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर, मैंने अपना स्किल डाला बायोमेडिकल का, ओके, बट ऑब्वियसली अब मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हुआ, मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्किल में डाल दिया। व्हाई वुड समबडी ट्रस्ट कि मैंने खुद ही स्किल में डाला है कि यार बायोमेडिकल इंजीनियर, बट देन आई कैन गेट इंडोर्समेंट्स। सो आई कैन आस्क माय सीनियर एट द हॉस्पिटल, जो कि फील्ड में 20 साल से काम कर रहा है, कि सर कुड यू इंडोर्स माय स्किल्स, सिंस यू हैव सीन मी वर्किंग इन अ बायोमेडिकल लैब, आप मेरे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्किल को आप इंडोर्स करें। तो वो मेरे स्किल को लिंक्डइन पे इंडोर्स कर देता है। अब जब कोई तीसरा बंदा मेरे प्रोफाइल को देखेगा, अब वो शायद मुझे कभी नहीं जानेगा क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में आया हुआ 1 साल भी नहीं हुआ, बट वो उस बंदे को जानता है जो कि एक बड़ी हॉस्पिटल में 20 साल से एक बड़ी पोजीशन पे काम कर रहा है, वो उसको जानता है। अब ये तीसरा बंदा ये देख रहा है कि दिस पर्सन हु हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20 इयर्स एंडोर्सिंग दिस पर्सन जो कि नया है, बट अगर ये कह रहा है कि इसके पास ये स्किल है तो होगा। सो दैट्स व्हाई एडिंग अ स्किल एंड गेटिंग एंडोर्समेंट इज लाइक इज रियली हेल्पफुल। एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द योर लिंक्डइन कुड बी कि आप अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस या फिर आप जिन कॉजेस के लिए काम करते हैं वो डालें। सो फॉर एग्जांपल इन माय केस, माय वॉलंटियर एग्जांपल ऑफ माय कॉज वाज blood donation drives. We used to work with blood donation organizations जो कि थैलेसीमिया के लिए काम करती थी, and I did write about it, and then one of the fellows did see my profile. वो शायद मेरे कैरियर में इंटरेस्टेड ना हो, मेरे एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड ना हो, मुझे शायद रिक्रूट ना करना चाहता हो क्योंकि वो मेरी ही एज का और मेरे ही बराबर का कैरियर में, बट व्हेन ही सॉ कि ओके आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट थैलेसीमिया और ब्लड डोनेशंस एज अ कॉज, और लाइक एज अ वॉलंटियर एक्सपीरियंस, तो नेक्स्ट टाइम वो जब थैलेसीमिया के अराउंड कुछ कर रहा होगा या फिर ब्लड डोनेशन के अराउंड कुछ कर रहा होगा, he wouldn't hesitate asking me. He would be way more open to talk to me about the problem, and then maybe हम शायद किसी बेहतर solution की तरफ जा सकते हैं collectively. That's what LinkedIn allows you to do, to connect with more people. So these are the 6 steps of creating a good LinkedIn profile. Okay, so a quick question time.
बीच में एक स्लाइड आई थी जहां पे हमने लिखा था कि प्रोफेशनल फोटो हो तो आपके इतने % चांसेस ज्यादा होते हैं आपके प्रोफाइल को देखे जाने के। Could anybody tell me वो कितने टाइम्स था? Anybody from the audience? Okay, so I guess nobody noticed. It was 14 times if your profile photo is added. अगर आपकी प्रोफाइल फोटो नहीं होगी आपके अकाउंट पे और एज कम्पेयर टू होगी, तो अगर अच्छी प्रोफाइल फोटो है तो आपके चांसेस 14 टाइम्स बढ़ जाते हैं कोई बंदा आपका अकाउंट खोल के देखेगा। क्योंकि अगर प्रोफाइल फोटो ही नहीं है तो सामने वाले के कहा ठीक है इसने अभी अभी बनाया होगा, इसने अकाउंट पे शायद कोई इतनी मेहनत ही नहीं की, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, जब सामने वाले टाइम नहीं दे रहा तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। वेल दिस एवरीथिंग ऑफ दिस, लाइक आप अपना एक्सपीरियंस डालेंगे, दैट इंक्रीजेस योर चांसेस टू बी व्यूड। आप अपना प्रोफेशनल समरी डालेंगे कि अगर चलो किसी ने व्यू कर लिया है तो आप प्रोफेशनल समरी डालेंगे, दैट वुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, तो आपके वो कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा। आप अपनी वो हेडलाइन डालेंगे तो मोर रेलेवेंट पीपल आएंगे आपके अकाउंट देखने के लिए। सो एवरीथिंग एड्स इन सम वे। What should you include in your professional summary? Again, 40 words, simple, no keywords, no buzzwords. You could tell your story in very simple words, 3 to 4 sentences, more than, let's say, 2 paras at best. Also, something that you can do on LinkedIn is कि आप अपने टाइप के ग्रुप्स जो हैं उनको डिस्कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप नेटवर्क जैसे ग्रुप ढूंढेंगे। बट फॉर एग्जांपल आप सीनियर पोजीशन पे है, अब आप आर्टिकल्स पढ़ना पढ़ना पसंद करते हैं, आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को ज्वाइन करेंगे, या फिर आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं तो आप यूएनईपी को फॉलो करेंगे, उनके उनके ग्रुप्स होंगे उनको फॉलो करेंगे। एंड सिंस ग्रुप में होता है ये कि जिस चीज का ग्रुप है, लेट्स से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ग्रुप है, तो आप ग्रुप में सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात ही हो रही होगी। इट्स मोर लाइक फेसबुक बट फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर योर कैरियर। तो होपफुली समटाइम्स लोग कर देते हैं फजूल पोस्ट लिंक्डइन पे भी, अब कोई रोक तो नहीं सकता, बट मोस्टली लोग प्रोफेशनल पोस्ट ही कर रहे होते हैं और कैरियर और इन चीजों के हवाले से ही पोस्ट हो रही होती है। सो दैट इज यूजुअली हेल्पफुल। With that, you need to discover the relevant content to you. For example, for me, it was healthcare, it was innovation, it was biomedical engineering. For you, it could be, let's say, chemistry, it could be agricultural, it could be desert science or something. आप अपना relevant content ढूंढेंगे, आप वो उस relevant लोगों से connect करेंगे. That's what you do. One more thing that is really available on the LinkedIn, really good people, really senior people are very active on LinkedIn. So for example, you would get President Obama, the CEO and the founder of the Microsoft and Bill and Melinda Gates Foundation, Bill Gates himself, he is active on the LinkedIn. You would find such people on LinkedIn. यहाँ पे ये लोग obviously ओबामा कोई जॉब तो नहीं दे रहा होगा, but what Obama would be doing is that he would be talking about what is his vision of the future. एंड जब ओबामा जैसा बंदा लाइक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कोई बात करता है ना, वो अपना विजन बताता है, व्हाट हैपेंस इज कि लाखों लोग उस विजन को फॉलो करके अपने विजन, लाखों ऑर्गेनाइजेशंस प्रेसिडेंट के विजन को देख के अपना विजन सेट करती हैं, एंड दैट गिव्स यू स्नीक पीक कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो लेट्स से यूएस का प्रेसिडेंट आता है, मिस्टर ट्रम्प आता है, एंड ही सेज आई डोंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज इज बुलशिट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट गिव्स यू अ विजन कि भाई यूएस की जो अभी 3-4 महीने की पॉलिसी होने वाली है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कोई खास अच्छी नहीं होने वाली। सो वंस यू हैव आइडिया ऑफ द विजन, यू हैव आइडिया ऑफ के पॉलिसीज क्या आने वाली हैं, आप अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर इस तरह की पॉलिसी आने वाली है तो मैं क्या स्टेप्स ले सकता हूं अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए। दैट्स व्हाट गिव्स यू फ्रॉम द इंडस्ट्री लीडर्स। And then finally, you have to keep sharing your updates on the LinkedIn. For example, आपने कोई internship की, you talk about it. आपने कोई activity की, you talk about it. Recently, हमारे interns ने बहुत अच्छी activities की. I saw it in Thar Parker. I saw it happening in the Khairpur. I saw it happening in the Naushera KPK. All of them, like some of them did connect with the students, some of them did connect with the farmers, and some of it actually went on connecting with the Lincoln corners, which are like actually hubs for talking about stuff. So what you can do is you can talk about these updates. So you could write a simple, let's say 200 300 article on that. Let's say it could be 400 words article
we were working as an intern with the Climate Action Pakistan, and as a part of our internship, we were asked to do an activity, and the activity had to be focused around, let's say, climate action, or let's say maybe plastic pollution, maybe something like that, and like why it is important. Then you could write 4 to 5 lines about plastic pollution, and then the next para could be, okay, हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि we could do this activity in this way, and then we partnered with Lincoln Corner, or maybe we partnered with the local farmers, or maybe we partnered with the local organizations, and then उस partnership से हमने, let's say, आपने 20 बच्चों को अपने impact किया, और 20 बच्चे अपने घर जाके बात करते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, तो हर घर में लेट्स से अगर आप ऑन एवरेज 5 बंदे भी ले लें, तो आप 20 into 5 100 बंदों को आपने इम्पैक्ट किया. दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्टिविटी. You could share your images about that, you could share your simple article about that, or if not this, then maybe आपने कोई certification की. Let's say recently I did the certification on foundations in healthcare management. I shared that certificate on the LinkedIn, and like one of my ex managers, जिससे मुझे बात की हुआ, I guess like 2.5 साल हो गए थे, he messaged me, yeah, he said, okay, I saw your certification, it was really good, and then we can talk further about it. And that was like really good for me कि यार मेरा एक manager जिससे मैंने 2.5 साल से बात भी नहीं की, he noticed my post and he texted me, okay, and like that gives you a stronger connection. And also, if you have some opportunity, if you have some internship to talk about, if you have some, like, हमारे ऐसे competitions चल रहे होते हैं, हमारी internship चल रही होती है, we share those as a post for the LinkedIn. And that's all LinkedIn is. It's very much Facebook, but for professionals and for careers. It's not about, I believe कि Facebook से सब अपडेटेड होंगे ही, एंड फेसबुक पे डीपी सबकी होती है, फेसबुक पे आपने अपना कवर पिक्चर सबने लगाई होती है, फेसबुक पे नीचे एक हेडलाइन की तरह भी एक फीचर होता है, वो भी सबने लगाया होता है. चलो समरी नहीं होती आई होप. और आप अपना एक्सपीरियंस नहीं डालते, लेकिन आप अपने स्कूल्स, अपनी जॉब्स अपडेट्स में डालते ही रहते हैं. Mohsin, जी मैम. I think we should wind up in like 1 hour Okay. time. So yeah, Just we were anyways on the last slide. Yeah, just leave 10 minutes for questions. So yeah, so I like also, I guess it would be your task कि आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में एज आर्टिकल शेयर करें, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाएं. So the next time we meet, I should be able to see your LinkedIn profiles, and maybe we talk about your activities as well. That is all from my side. If you have any questions, feel free to ask. If audience have any questions. I guess someone has raised hand. Lala, ma'am, you have raised your hand. Anyone else want to ask a question, or if you have any problem or any query? Did you highlight on the importance of hashtags? So hashtags work more like keywords, but hashtags are like more direct. So for example, if you add a hashtag climate change, that acts more actively than a keyword in your summary. For example, if I was to talk about this today's session on LinkedIn, the hashtags I would use is storytelling, climate action Pakistan, and something as plastic pollution. So that gives, जो भी बंदा search करेगा, तो if the person searches for the post, तो directly ये वाली post जिनमें ये hashtag use किए गया है, वो ऊपर आएंगी. That what helps you with the SEO. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन चैट. अदरवाइज एक छोटी सी आई मीन फ्रॉम दिस सेशन, आई होप आफ्टर दिस सेशन आप सब अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करोगे, अपडेट करोगे. लाइक आई मीन देयर आर मल्टीपल अदर रिसोर्सेज टू लर्न मोर अबाउट इट, लेकिन हमारा मकसद था कि इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना, दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू सीक वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज एंड लाइक इवन बियॉन्ड जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा. Just on that note, 1 second, I will